नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 10वीं जमात के तलबा के लिए जो अंग्रेज़ी का मज़मून है इसमें पोइट्री सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक हमने लगभग 4 पोएम्स पढ़ी हैं जो 10वीं जमात के सिलेबस में हैं। तो स्पीक अप फैज़ अहमद फैज़ जो कि दरअसल उर्दू में लिखी गई एक नज़म है जिसका उन्वान है बोल बोल के लब आज़ाद है तेरे। तो इसको हमने अभी तक 4 सेक्शंस में अंडर डिफरेंट हेडिंग्स डिस्कस किया है। तो आज मैं इसका आखिरी हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इट्स अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच से हम समझते हैं कि ये अल्फाज का या जुमलों का या फ्रेजेस का एक्सप्रेशंस का ऐसा इस्तेमाल है जिससे माने में सिमेंटिक्स में और इजाफा हो जाता है, माने में गहराई पैदा हो जाती है। और कारी जब इस चीज़ को पढ़ता है, किसी तख्लीक को पढ़ता है, तो बहुत कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जो माने हैं वो बयान किए जाते हैं। सो वी कॉल दैट figure of speech. If any word is used figuratively and that connotes a lot other than the common usage, so we call that it has been used figuratively or figures of speech have been used. So one among these figures of speech is the metaphor. It's one of the important things. So metaphor is a device, it's a figure of speech that's used to compare the two things, two unlike things, two different things. So when we compare them on the basis of some common quality. But unlike simile, we don't use here like and as. So reading from this what you are weaving, it's metaphor is a figure of speech in which comparison is made between unlike things. It's a comparison between unlike things indirectly, so categorizing them as identical. A metaphor is a word basically or a phrase used in an imaginative way. It's used in an imaginative way to describe something else. It's used to show how two different things have the same quality. दो चीज़ें जिनकी हम आपस में मुशाबत दिखा रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो बिल्कुल दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे हम किसी इंसान को कहते हैं कि वो शेर है, वो शेर है। इंसान तो हम नहीं कह सकते हैं कि शेर और शक्ल से सेम है या वो साख्त के मुताबिक सेम है या उनके रहने सहने का ढंग सेम है। दरअसल हम किसी एक चीज़ की बुनियाद पर, मसलन बहादुरी की बात ले लें, जब हम किसी को कहते हैं कि वो शेर है, हम अक्सर बहादुरी का जो एलिमेंट है उसी को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। सो एट दैट टाइम वी आर बेसिकली कंपेयरिंग these two things, but actually we want to highlight some particular quality. It's not that all the things are identical, they are all same. Basically only one thing is similar between the two. So in this poem Speak Up, a lot of things have been used as metaphors. For example, various metaphors used in this poem are the oven. So the oven has been used imaginatively, but it doesn't actually refer to the oven, it refers to something else. Similarly, the flames, so the poet doesn't talk about the flames, but figuratively he talks of something else. Similarly, the padlocks and the fetter, these are the metaphors used. So let's try to understand a bit. For example, these metaphors have been used to describe the struggle for India's freedom in a symbolic manner, and metaphors describe some aspects of our struggle for freedom in an imaginative manner. So for example, when we talk of the oven or the flames, this is basically the freedom struggle that's going on. It's burning like the flames in the oven. So then there are padlocks and fetter. They actually symbolize, they are metaphorically used for the restrictions and
curtailments and the hurdles and the obstacles that are all around. So these are metaphorically used. Then we have figure of speech, that's imagery. Imagery جو منظر کشی کی جاتی ہے, تصویر کشی, جو تصویروں کا استعمال کوئی شاعر کرتا ہے, الفاظ کا ایسا استعمال کہ وہ کسی منظر کی ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ پڑھنے والے کی آنکھوں کے سامنے اس منظر کی پوری تصویر آ جاتی ہے. وی کال دیٹ امیج. کیمرہ سے جو امیج کھینچی جاتی ہے وہ بھی ایک طرح کی تصویر کشی ہے, لیکن الفاظ سے جب ہم کسی منظر کی تصویر کشی کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیوٹیفل ہو جاتی ہے. The blacksmith shop جس کا تذکرہ ہوا ہے, جب ہم بلیک سمتھ شاپ جس کو اس پوم میں ڈسکس کیا ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے, تو ایسے تذکرہ ہوا کہ بالکل جیسے ہم کسی لوہار کی دکان میں خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں. So basically this blacksmith shop stands for the situation the freedom fighters have created for the liberty of their motherland. It's no different from the blacksmith shop where flames and red oven is there. So red oven, fierce flames, ایسے الفاظ کا استعمال ہے. They stand for their courage. تو یہ ان کی ہمت ہے جو بالکل آگ کی شعلوں کی طرح بھڑکتی ہے اور بالکل کمزور نہیں ہے, سرخ ہے. The chains and the fetters are the epitomes of slavery which are determined to break. یہ chains, fetters جو ہے, these are restrictions, these are the symbols for slavery. تو جن کو شاعر نے بتایا ہے کہ ان کو توڑنے کی, بریک کرنے کی ضرورت ہے, and everybody must be determined for that. So basically these are the images that represent the poet's ideas and the situations at the time when India was occupied by the British, and he has used vivid and beautiful images to describe his thought. So this was all about this figures of speech. There can be some other figures of speech, but mostly these two metaphor and images. These are used in the examination about this poem. So I think it's all about it. So thank you for today.